highlight the role of physiography or natural factors. Okay, so ये key है, and that is talking about the village settlements. Okay, and whenever we are talking about the village settlement, we have to think of a time when it might have started. The settlements might have started. Okay, wonderful Manish, बहुत अच्छा. So you have to think of a time when this might have started. We are not talking about today, because these settlements are very old. Okay, these are the settlements where people are living for, let's say, 400 years, if not more, 300 years, 200 years. Okay, continuous generations. All the people are living there, one generation, second, third, fourth, fifth. You'll ask them, maybe your father, your grandfather, they'll tell you, yeah, we were residing in this area for these many long years. Okay, so you have to talk about the conditions which might have helped these areas in developing the type of village. Okay, or the patterns that have developed. ठीक है, वो ऐसा बनने में उस चीज ने हेल्प की होगी, नेचर ने. सो वी हैव टू टॉक अबाउट दिस थिंग. ओके, सो इसका इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी द इंट्रोडक्शन टू दिस क्वेश्चन? What can be the introduction? If we look at the length and breadth of the country, we see different type of villages with different patterns. Okay, which in itself shows that the physiography or the natural factor has influenced them. Okay, so simple statements. We don't have to give complicated statement as a इंट्रोडक्शन. एक सिंपल स्टेटमेंट जिसमें हमने बता दिया कि हम ये मानते भी हैं, हम ये जानते भी हैं कि ये चीज इन्फ्लुएंस करती है. ओके, दिस थिंग इज इन्फ्लुएंसिंग. सो when we have given the introduction, now we'll do what? The role of the physiography can be established by looking at some of the discussions. ठीक है, और some of the examples below. ऐसा स्टार्ट कर सकते हैं. सो अब इसको हम हेड्स में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं. सो फिजियोग्राफी ऑन विलेज सेटलमेंट. सो रोल में क्या है? विलेज स्टार्ट होगा, बना होगा, पहली बार सबसे पहले किस चीज से हुआ होगा? रॉ मटेरियल चाहिए होगा. ओके, रॉ मटेरियल फॉर हाउसेज. दे मस्ट हैव बिल्ट देयर हाउसेज विद सम मटेरियल, and some of the places are still using the same things. Okay, तो विलेज सेटलमेंट का सबसे पहला घर बना होगा, दूसरा बना होगा, चौथा, पांचवा, तब वो जाके विलेज हुआ होगा. 8-10 घर हो गए होंगे तो. सो यू हैव प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स, राइट? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, बैम्बू हाउसेज. Okay, this is the raw material. So नॉर्थ ईस्ट के घरों के बारे में क्या है? बैम्बू हाउसेज. इफ यू टॉक अबाउट लेट्स से यूपी एंड बिहार, ओके, मड एंड थैच. वेस्ट बंगाल, नॉर्थ इंडिया में मिट्टी, एलुवियल सॉइल है, उसी को क्या है, लगा के दीवारें बना देते थे, छत बना देते थे. यहाँ लकड़ियां होती थी तो कहीं कहीं मड एंड वुड. Okay, if we talk about Ladakh, so that is an area where big stones are there. तो stone से बनाते हैं वो, stone and boulders. So these all three places are like what? They have different type of natural endowments, the things that the nature is providing. Okay, they have different physiography, raw material for the houses. अब इसी में आप क्या है, रॉ मटेरियल को या तो आप टाइप्स ऑफ हाउसेज में भी कर सकते थे. ओके, टाइप ऑफ हाउस,
क्योंकि हाउस से ही तो विलेज सेटलमेंट पूरा होता है। टाइप कैसा है? दिस इज मेड ऑफ बैम्बू, मैंने पढ़ाते हुए आपको दिखाया भी था। दिस इज लाइक it is above the ground because a lot of rainfall happens, plus everything is made up of bamboo, and the house is, everything is like this, more rain. अब यहाँ यूपी बिहार, they are grounded, the house is even of mud, okay. So traditionally it is not going to be exactly like this, but some areas it was curved, okay, something like that. With time it became flatter and flatter as the rain ke dependent, but this is not like this, okay. Somewhat flatter when compared with, even in Bengal you'll see such thing. Ladakh, they are like snowfall and everything is happening, okay. So their houses, ये क्या है, स्टोन्स के बने रहते हैं, तो स्ट्रेट स्ट्रक्चर्स ही बन सकते हैं, आप उनको बहुत अरेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड दे आर लाइक स्टेप्ड पैटर्न्स। अंडरग्राउंड भी बनेगा, एक कमरा जमीन के नीचे होगा, एक कमरा जमीन के ऊपर होगा, सरफेस के नीचे सामान रखने का व्यवस्था, ओके, बिलो द ग्राउंड। सो दिस इज ऑन ग्राउंड, दिस इज अबव द ग्राउंड, देयर इज बिलो द ग्राउंड, सो यू हैव गिवन बेस्ड ऑन द टेम्परेचर, क्योंकि ऊपर अब इग्लू जितना ठंडा नहीं है, ठीक है, लेकिन उनको क्या है, सेफ्टी चाहिए, धरती के अंदर थोड़ी गर्मी रहती है, सराउंडिंग एरिया ठंडा भी हो जाए तो वो नीचे रखते हैं, यहाँ सामान रखते हैं, आग जलाते हैं, अंदर रहते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिशनल हाउसेज आर लाइक दिस। नाउ ये तो आपने बता दिया। नाउ नेचर और कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, हाउस सेटलमेंट पैटर्न्स की बात करते हैं, टाइप्स की, ठीक है। अब सॉइल क्वालिटी अगर देखिए, सॉइल क्वालिटी अगर बहुत फर्टाइल है, ओके, तो क्या होगा, ए लॉट ऑफ concentration of houses nearby, so compact settlements, ठीक है, compact settlement, lot of people residing in an area and they are like using the fields around together, ठीक है। तो ये सब चीजें वो हैं जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यू कैन टॉक अबाउट दिस, some areas, okay, where the quality is not good, what we see, yeah, hilly areas, scattered settlement, nature is determining this thing, okay। तो नेचर ऐसा कर रहा है ना, some of the areas, रोहिल खंड, तराई रीजन की अगर हम बात करें, हेमलेटेड सेटलमेंट्स, लेस नंबर ऑफ हाउसेज। तराई में क्या है कि बहुत सारे लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं, एंड दैट रीजन इज लाइक, ओके, हेमलेटेड, 4-5 घर हैं, वो गांव खत्म हो गया, फिर 5 किलोमीटर गए, 4-5 फिर मिले, तो वैसे टाइप के भी सेटलमेंट होते हैं, ठीक है। नाउ सॉइल क्वालिटी की आपने बात की एंड टाइप ऑफ सेटलमेंट पे बात किया। A pattern of settlements, you can talk about the patterns of village settlement, okay। If we talk about the patterns of settlement, so if you are going to some area, let's say Govind, कोई बात नहीं, you can cover that thing afterwards, internet issue is a general issue, so you can cover that later. So let's say if you are going to some area where a river is flowing through the mountains and rest of the area is covered by mountains, okay, or maybe the terrain which is not good, so settlements develop linearly around the rivers, ठीक है। So we'll see some form of linear pattern,
Okay, this is a linear pattern. Okay, now if we talk about some of the areas which are always flooded, ठीक है, पानी कभी भी ज़्यादा हो जा रहा है, कम हो जा रहा है. So like some part of northern Bihar, scattered settlement. So you can add about dispersely scattered pattern. Okay, when two rivers are meeting, okay, let's say two rivers meeting in some area. Okay, this is natural. So some of the settlements will be holding here because these lands are very fertile. So it will look like arrow. Okay, so they also influence this thing. Okay, so patterns. फिर हमने देखा है बाकी सेमी न्यूक्लिएटेड होने में, न्यूक्लिएटेड होने में जो हमने देखा था. यू हैव टू टॉक अबाउट all those things, settlements. Okay, where it was easier to clear the forest, some other type of will be there. लिविंग ट्री ब्रिजेस मनीष लोग नहीं बनाते हैं, लेकिन ये हेल्प करता होगा. ठीक है, लोग पार करते होंगे. बीवर्स बनाते हैं. ठीक है, तो इनडायरेक्ट रिलेशंस पे बाद में जाएंगे जब पॉइंट ही ना बचे लिखने का. ओके, अभी एरो हेड पैटर्न हमने देखा. ठीक है, सम ऑफ द एरियाज ट्रायंगुलर पैटर्न कन्वर्ट हो सकता है. ओके, so you have to talk about some of these features which the nature is doing. Rajasthan area mein, if you see, something different is going to be there. So some diagrams as well. Okay, this is linear pattern, arrowhead pattern. So if you do something like this, you can easily conclude. Okay, plateau region में अलग बनेगा, आपका plains में अलग बनेगा. If you go to the islands, there will be a different type of influence. So जितना आपको scope होगा, that is a very easy question, and even 600 words भी लिखा जा सकता है. ठीक है, different part of the places we are taking some of the examples, and you can show these things, and then what you can say, that most of the areas started, the village settlements started developing based on some of the gifts that nature has provided. Okay, and some modifications were done with when humans learned to do to utilize better the resources. तो ऐसा एक conclusion लिख देंगे. हाँ, ओके, बैम्बू पे बनाते हैं. ऐसे भी बारिश बहुत आती है, जमीन पे हमेशा पानी रहता है, सांप वाप घूमते रहते हैं, वो घर में आ जाते हैं. ओके, so you have to talk about these things here. Okay, so this is